Hi friends, I'm Simple here again today with another lecture on Information Systems Management. As we have already covered in the last lecture, the meaning of information and importance of information. So today we'll talk about characteristics of information. अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Characteristics of information. Why we have to study this? Because information is very important for any of the company or organization. Good information is relevant for its purpose, sufficient for being used, complete for any problem, reliable and must be targeted to the right person. If we can see here कि एक information जब तक मेरा पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है इट इज़ नॉट सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और जब तक वो कंप्लीट नहीं है, रिलायबल नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है और करेक्ट ऑडियंस के लिए नहीं है, टारगेटेड पीपल के लिए नहीं है, इट इज़ यूजलेस. इट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेटेड इन टाइम, इज डिटेल्ड इनफ to be understood and is communicated to the user by an appropriate channel. जब तक information communicate timely नहीं हो रही है, right person तक नहीं पहुंच रही है, detailed नहीं है और appropriate channel के through communication नहीं हो रहा है, it will be totally waste. So let us have a look on the good information. Must have the following characteristics. Number one, it has to be reliable. It must be verifiable, must come from a reliable source and meet the objective of the user. Means जहाँ से हम उस information को collect कर रहे हैं वो source मेरा reliable होना चाहिए, information verified होनी चाहिए और जो मेरे user का objective है उसे वो meet करे, उसके लिए usable हो. Right? So second characteristic is timely. Any information is useless if it is not reaching on time to the needed person. So information must be given on the time for the purpose for which it is needed. So whichever information is made, that must reach on time to the right person. Information retrieved too late will be of no use and irrelevant. डेफिनेटली अगर इंफॉर्मेशन बहुत लेट पहुंच रहा है तो वो किसी काम का नहीं रहेगा और इररिलेवेंट हो जाएगा. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज रेलिवेंट. द इंफॉर्मेशन हैज टू बी रेलिवेंट विद द करंट सिनेरियो. जो करंट टाइम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो एंड वैलिड इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज. इट हैज टू बी एक्यूरेट, अनसर्टेनिटीज नहीं होनी चाहिए. नाउ information has to be sufficient and adequate. It should be adequate in terms of quantity so that decisions can be taken on its basis. अगर मेरी information sufficient नहीं है, adequate नहीं है, there is some problem, there is some lacking points in the information. So decisions cannot be taken rightly on the basis of the given information. Unambiguous. It should be expressed in clear terms. In other words, it should be comprehensive. Means my information should be very much clear. There should be no confusion in the information presentation. जो information disseminate हो user के पास, it should be totally unambiguous, totally clear, complete. It should meet all the needs in the current context, as partial information is of no use and leads to the wrong decisions. It is one of the very important characteristic because completeness of information marks the good decision making of any organization. एक मैनेजर के पास अगर MIS रिपोर्ट्स के थ्रू कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है करंट कंटेक्स्ट में, करंट सिनेरियो को माइंड में रखकर, तो ही वो करेक्ट डिसीजंस ले पाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ प्लान्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. पार्शियल इंफॉर्मेशन होगी तो रॉन्ग डिसीजंस होंगे, लॉन्ग टर्म में इट कैन गो इनटू द लॉसेस. एक्यूरेट, इट मीन्स इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स एंड ट्रू. कहीं भी इंफॉर्मेशन के एक्यूरेसी लेवल में अगर डाउट होगा या कहीं भी कोई मिस्टेक होगी तो उससे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इवन द डिसीजन टेकन एट एनी लेवल कैन लीड टू बिग फेलियर्स और बिग लॉसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन. So information has to be error free and mistakes and has to be absolutely true.
कहीं उसमें कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. So continuing with the characteristics, consistent. It means कि जो उसका डेटा फॉर्मेट है वो करेक्ट होना चाहिए. जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है और जिस फॉर्म में यूजर तक पहुंच रही है, दैट शुड बी करेक्ट. डेटा का फॉर्मेट अगर चेंज हो जाएगा, देयर कैन बी बिग प्रॉब्लम्स. और दैट द डेटा इज करेक्ट इन रिलेशन टू द अदर डेटा. अगर डेटा का कोरिलेशन है कहीं पर इंफॉर्मेशन में, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. अगर वो गलत होगा, सो इट विल लीड टू इनकंसिस्टेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक ही इंफॉर्मेशन अगर अलग अलग तरह से स्टोर हो रही है, दैट लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी. सो द इंफॉर्मेशन हैज टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. Explicit. It should not need any further explanation. It should not require further analysis by the recipients for decision making. What does it mean? It means कि एक बार इंफॉर्मेशन को जब हमने डिसेमिनेट कर दिया, यूजर्स को दे दिया, तो उसे फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े. इट शुड बी इनफ एक्सप्लेन्ड. एंड फर्दर एनालिसिस जो लोग उसके ऊपर कर रहे हैं, they can straight away use the information for decision making. So next point is comparable or unique. It should be of uniform collection and well analyzed. In order to add value to any organization, information must be unique and distinctive. It is very important thing. Information is available on the internet at every place these days. Worldwide, global level पर information becomes available. Now the same information is disseminated or the same information is presented in the different manner by different people or by different MIS systems. So हम अपनी information को अच्छे से analyze करें, tools के through uniformly collect करें और उसे इस वे में प्रेजेंट करें और इस वे में डिसेमिनेट करें कि इट शुड बिकम यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि मेरी इंफॉर्मेशन यूनिक हो, हर डिपार्टमेंट उससे कुछ नया यूजेबल ले सके. इम्पार्शियल. Impartial information contains no bias and has been collected without any distorted view of the situation. Very important. हमारी information impartial हो, biasness नहीं हो, और जहाँ से भी हमने उस information को collect किया, that should be distorted view of the situation. हमने उसे alter नहीं किया हो. As unbiased, it should be impartial, free from any bias. In other words, it should have the integrity. More or less, impartial and unbiased are the correlated things. Cost effective. The cost of obtaining information must not exceed the benefit of the information in the monetary terms. Whatever amount is used for information, whatever amount we are using on information in monetary terms, that should be less than the benefits. इन्वेस्टमेंट कम रहे इंफॉर्मेशन पे और बेनिफिट ज़्यादा हो, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. सो we have seen today all the characteristics of the information. I have kept this topic separate in a separate video so that you can have a complete view of the characteristics of information. In the next lecture, we'll come up with sources and types of information quite soon. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, so kindly like, subscribe and share the channel. We'll come up with much more in the future. Leave your comments in the comment box. Give your suggestions. You are most welcome. Thank you so much. Bye-bye. Have a nice day.